Okay, in this video we will see how you can handle the malware. Okay, so let's suppose you have a VM machine and you have a .exe executable file. Okay, and uh, in this VM machine, that is your host. Okay, malware can be used by like a .exe executable .js .dll as depend on how complex that malware. Okay, तो malware कितना complex है और कितना hard है find out करने के लिए और कितनी मतलब critical है system के लिए हमारे, ठीक है. So it's depend on these things. .exe .js .dll, these are the types of define that how critical that malware is. Okay, ठीक है. So .txt या .md, that is not that critical things. Okay, इतने ज़्यादा भी critical नहीं है ये, but yeah, that can harm also your system. So malware handling जो है बहुत ही इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हाँ, कहने को हम बोल सकते हैं कि हम अपनी जो वर्चुअल मशीन है, होस्ट है हमारा, ठीक है, उसमें जो भी फाइल आएगा हम इजीली हैंडल करके रखना है उनको, मालवेयर को, ठीक है. सो that is the part of the basic malware handling. Like if you see like these kind of things, .exe .js .dll, that you need to handle these files very carefully. If you handling these type of the malware, you need to handle you can handle also with the careful, because we don't know what these malware gonna do in your system, okay. So so okay, as you see inside the directory, we have the malware calc exe. Okay, exe .7, we have the password txt, we have sha256 num .txt. So whatever you see here, malware calculator .exe .7z. Okay, this is the type of the malware that we need to handle very carefully. Okay, so it is zip file, ठीक है, ये zip file है हमारी, ठीक है. अब जब हम इस फाइल को बहुत ही केयरफुली हमने ओपन करना है 7-zip में, ठीक है. सो लेट मी जस्ट ओपन दिस. Okay, so here, okay, so here we open the 7-zip. So here you can see that we have malware cal .exe, but we just need to drag and drop this file, but it need a password. ठीक ठीक है, ये पासवर्ड मांगेगा. डजेंट मीन कि पासवर्ड क्यों मांगेगा, मैं रीज़न बताता हूँ. जब भी आप कोई भी exe फाइल आप मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो just wait a minute. Okay, so whenever you doing the unzip that file, so make sure that is really protected, so you will remind like okay, it's protected and we need to very handle very carefully. So the password रहेगा आपका इन्फेक्टेड, ठीक है. हम इसके जो एक्सटेंशन है हम चेंज कर देंगे, जो लास्ट का माउजर है उसको क्लीन कर देंगे, डिलीट कर देंगे. अब एक्सटेंशन चेंज होएगा, हम बोल सकते हैं यस, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, यस ऑफ कोर्स वी वांट टू चेंज, ठीक है. So click on the yes. So now we have the executable file. So we don't know exactly what it's doing. It gonna open the calculator. कैलकुलेटर ओपन करेगा या फिर कैलकुलेटर ओपन करने के साथ कोई और प्रोसेस करेगा. वी एक्चुअली हमको नहीं पता है कि बेसिकली ये क्या करने वाला है प्रोसेस, ठीक है. सो let's click. Okay, so it's opening the calculator. So we actually don't know that is really opening the calculator, or it's also doing something else behind that the process, something else like so. इस चीज़ के लिए फ़िलहाल तो ये अभी तो कैलकुलेटर ही खोल रहा है, ठीक है, बट वी विल सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली गोना डू दैट. ओके, सो या, सो दैट्स हाउ यू कैन हैंडल योर मालवेयर. ओके, सो बेसिकली मोटिव ये था कि आप कोई भी आपके पास मालवेयर है, जिप फाइल है, सो मेक श्योर आप उसको वीएम मशीन में ही ओपन करें, केयरफुली ही हैंडल करें. जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी .exe हो गया, .dll हो गया, .js हो गया, दीज टाइप ऑफ मालवेयर फाइल एक्सटेंशन फाइल्स यू नीड टू हैंडल वेरी केयरफुली. बहुत ही केयरफुली से आपको हैंडल करना है इनको, और स्टोर करके रखना है, ठीक है, जैसे कि आप एनालाइज कर सकें. कोई भी एनालिसिस है तो ये चीज़ों को वो एक जिप फाइल में रखता है, जिससे कि वो
एक्सीडेंटली वो क्लिक ना कर पाए कोई भी, जब भी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन आपका सिस्टम यूज़ करता है, सो बेटर है कि आप उसको अच्छे से हैंडल करके रखें, ज़िप फाइल बनाएं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाएं, ठीक है। सो दिस इज़ द मोटिव बिहाइंड दैट। So we will see you in next video. Okay.